Hello everyone, welcome back. Students, in this video we are going to study a new lesson. The title is there add question tag, जिसे हम दूसरे लैंग्वेज में add tag भी कह सकते हैं. So first of all, without wasting our time, we'll go towards structure. हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को जान लें, बिकॉज स्ट्रक्चर हम लोगों को बताएगा कि आपका आंसर फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा. सो लुक एट दैट द स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन सेंटेंस एज इट इज़, मीन्स बिना हमें कोई चेंज किए सबसे पहले जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसी को आंसर में लिखना है. आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड कॉमा. After the comma we will use helping verb in the sentence, whether it is given or whether it is not given, but helping verb is compulsory. After the helping verb we are going to see the positive and negative changes in the sentence. According to we will add not, or sometimes we will not add not in the sentence. Second last subject it will come, or at the last question mark will be given there. So student, this is your structure. In that structure, given sentence as it is, after that comma, next helping verb, proper use of negative positive word, subject, and at the last that question mark will be there. This is your structure is there student. इस structure को और अच्छे तरीके से जानने के लिए that few steps are there student, because structure में हम हर एक word को use नहीं कर सकते. That's why we are going to add some steps over there. So look at that student. First step is there, that first write it down, given sentence as it is in answer. That what it is there student. First of all we are going to add given sentence as it is without changing any spelling or any letter. So this is the first one step is there. Second one, instead of full stop we have to add comma. Means as we know that at the last of the sentence what it will come student, full stop, and it will tell to us that where our sentence going to be finished. But in answer, once you have written the complete sentence, so at last full stop it will be there student. So you have to remove the full stop, or in place of that you are going to add comma. Got it? Third one step, after the comma write it down, write it the given auxiliary verb or a helping verb in a sentence. So third one step is very important student. Once you have added the comma, next thing is what required in the sentence is what student, helping verb or a auxiliary verb. So whatever helping verb it will come in the example or in question, that only we have to take it. Fourth one rule is very important student. Try to understand that the proper use of negative and positive word. Okay, how we have to do that, कैसे समझ कर ले किस तरीके से प्रॉपरली हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव का रूल्स का यूज़ करना है. कंसिडर दैट योर सेंटेंस इज पॉजिटिव, सो एट दैट टाइम इन आंसर व्हाट वी हैव टू डू, इन आंसर वी हैव टू ऐड नेगेटिव वर्ड, जिसे हम हिंदी में समझ कर ले तो किस तरीके से समझ कर लेंगे कि आपके क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है. मीन्स नो, नेवर, नॉट, नथिंग लाइक दैट वर्ड इज नॉट गिवन देयर. सो इन आंसर व्हाट यू हैव टू ऐड स्टूडेंट, यू हैव टू ऐड नेगेटिव. इट मीन्स दैट यू हैव टू ऐड नॉट. बट कंसिडर इफ योर सेंटेंस इज नेगेटिव, मीन्स आपके क्वेश्चन में नो, नेवर, नॉट, नथिंग लाइक दैट वर्ड इज गिवन देयर. सो आंसर में आप लोगों को ऐसे भी कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करना है. इट मीन्स दैट योर आंसर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव. सो दिस इज द प्रॉपर यूज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिसे हम आसानी से समझ कर ले. आपके क्वेश्चन में कभी नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं आएगा, और आपके क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आपको ऑब्वियसली आंसर में नॉट लेना पड़ेगा. फिफ्थ वन स्टेज, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एड सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. हमें जब सेंटेंस फिनिश करना है तो यू कैन सी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रक्चर लास्ट टू वर्ड्स आर देयर. सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट वी हैव टू ऐड, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क वी हैव टू ऐड. सो वही रूल्स आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएंगे स्टूडेंट्स के. एट लास्ट आपको सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना है. सिक्स वन रूल्स, इफ इन द सेंटेंस एक्सुअलरी वर्ब इज नॉट गिवन देयर एट दैट टाइम व्हाट टू डू. जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब रहे या ना रहे, बट आंसर में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ज़रूर करना है. कंसिडर करो कि आपके क्वेश्चन में, आपके सवाल में, आपके क्वेश्चन में कोई हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डीड नहीं दिया गया, और ना ही इसके जैसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिया गया है. सो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट, at that time you have to use proper helping verb. Which are the proper helping verb student? Do, does or did. In that any one helping verb you are going to use that. बट क्वेश्चन खड़ा होता है कि डू, और डीज कैसे इस्तेमाल करें डू, डज, डिड को. सो स्टूडेंट लुक एट द रूल्स. कंसिडर नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर, बट एट दैट टाइम वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज गिवन देयर टू यू. जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा सो शायद आप लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया जा सकता है. जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो आप लोगों को डू का इस्तेमाल करना है. इफ़ वर्ब इज देयर बट एट द लास्ट ऑफ द वर्ब एस और es apostrophe is added, for example takes, goes, like that word is there student. So at that time you are going to take does. And consider verb second form is there, like finish, completed,
okay, went, like that word is there, so at that time you are going to take helping verb did. I hope so you got it, how to use properly do, does or did. Student, seventh one rule is there, or we can say seventh one step is there, that these rules I have not student written in any that what we can say that structure. So what is the rule, student? That if your sentence is imperative sentence, that if your sentence is starting from kindly or please, or it started from helping verb, at that time what we are going to do, students? So we will take as a question tag will you question mark or aren't you question mark. इसे हिंदी में समझा देता हूँ स्टूडेंट, कि आपका सेंटेंस कभी काइंडली प्लीज या वर्ब से स्टार्ट होता हो, उस वक्त आप लोगों को एज अ क्वेश्चन टैग विल यू क्वेश्चन मार्क या ऑन्ट यू क्वेश्चन मार्क, इन दोनों में से किसी एक चेंजेस में आप लोगों को कराना पड़ेगा. आई होप सो स्टूडेंट यू आर गेटिंग दैट. नेक्स्ट वन इज देयर स्टूडेंट वर्ड. ये रूल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दैट समटाइम्स योर सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम लेट्स और लेट अस. कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो लेट या लेट से शुरू हो सकता है. जब आपका क्वेश्चन लेट या लेट से स्टार्ट हो रहा है या लेटेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट, दैट यू हैव टू मेक एज अ एड क्वेश्चन टैग शैल दे क्वेश्चन मार्क. क्या बनाना है आप लोगों को? शॉल दे क्वेश्चन मार्क. इन दैट like that you have to take and you have to make the answer. Now few negative changes in helping verb is there student, कि कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम नेगेटिव बनाते वक्त उनका पूरी तरीके से स्पेलिंग में चेंजेस होता है. फॉर एग्जाम्पल एम इज़ देयर, और एम को नेगेटिव में वर्ड यानी हम एपोस्ट्रोफ नॉट ऐड कर रहे हैं एम को, तो एमेंट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड स्टूडेंट. सो व्हाट इट विल कम इंस्टेड ऑफ एम, aren't it will be there. Like that if shall is there, so shall it will change into shan't, SHANT. And at last will is there, so will it will change into aren't. Got it student? By using the 7th and 8th steps and structure, we can solve any example of any standard student. For example, look at that one example is there. They have allowed cutting trees. What example is there student? They have allowed cutting trees. So according to our steps and according to our structure, what we will do, we will write as it is given sentence in answer. So look at that, in answer I have written they have allowed cutting trees as it is. सेकेंड स्टेप इज वर्ड स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप यू हैव टू ऐड कॉमा. सो जहाँ पर आप देख रहे हो ट्रीज के आगे एक फुल स्टॉप है, उसे निकालकर उस जगह पर कॉमा ऐड किया गया. थर्ड वन इज वर्ड स्टूडेंट दैट वी हैव टू टेक हेल्पिंग वर्ब एंड लकीली वी गॉट द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस हैव, सो हैव को लिया गया. Fourth one is what, that sentence is positive or negative, so you will get to know that they have allowed cutting trees, in that no negative word is there. It means that the whole sentence is positive. So what changes I have done student? In answer I have added haven't, means I have added negative word. At last I have added they is as a subject, and at last question mark will be there. So complete answer is what student? जैसे आप लोग देख पा रहे हो complete answer बनेगा हमें they have allowed cutting trees, haven't they question mark. Like that we have to do the changes. Student, now few example is there again for more understanding. So look at that, he bought some land. This is an example, he bought some land. You will get to know that आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है. But I told it to you while you making add question tag, if in the sentence helping verb is given or not given there, but in answer definitely we have to add helping verb. Look at that what changes I have done here according to rules and steps. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, राइट इट डाउन द गिवन सेंटेंस. सो जो क्वेश्चन में दिया गया था उसे ही आंसर में लिया गया कि ही बॉट सम लैंड एज इट इज. सेकेंड स्टेप इज व्हाट, इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप यू हैव टू ऐड कॉमा. सो लुक एट दैट, आफ्टर लैंड आई हैव एडेड कॉमा. Third one is what student, you can see in the sentence no helping verb or no auxiliary verb is there. जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया जाएगा, so properly which helping verb you can use? You can use do, does or did. In that any one helping verb you can use student. So easily you will get to know that here I have taken did. But the question arise that how I have taken did. So you student, you can see that bought. Bought is the verb second form. So which is the first form student? Buy, B-U-Y, buy is the first form, bought is second. So here verb second form is there. So according to our rules, if in the sentence no helping verb is there, but in the sentence verb second form is there, so you can take helping verb as did. So here I have taken did. How I have added not? So the another rule is there, if your sentence is positive, convert into negative. Your sentence was completely positive, so student I have added a negative not word, and at the last subject is there, so he as it is I have written, and at the last question mark. Next one student, I am attending the this webinar.
I am attending this webinar. This is another example. Here we will do some changes, student. So first changes what I did, I have written complete sentence as it is. I am attending this webinar. After that I have added comma. After the comma, am is there, and we have to convert into negative because I am attending this webinar. It's completely sentence is positive. So while we are making while we are converting into negative, so am it will change into aren't. So look at that. Instead of am, what I did, student, I have written aren't. After that, subject is there. Which one is that, student? I. And at the last of I, question mark I have added. Fourth one example, and it's related to second last rule, student. Please come in. This is an example. One of the rule is there that if your sentence is starting from please or kindly, or if your sentence is imperative sentence, so student, this is an imperative sentence because here it started from please or kindly. Second thing, after please or kindly, come is there. Come is what, student? It's a verb. So what we have to do, same structure we will follow, means we will write as it is, question into answer. Please come in, I have written. After that we have added comma, and in according to that rules, you can make will you or aren't you. In that any one you can add it, but let me explain it to you perfectly where to use aren't you. So student, if your sentence is starting from please or kindly, so keep it one rule in your mind, that 100 out of 100% you have to make aren't you question mark. And the last rule, student, that last rule is what? If your sentence is started from let's or let us, at that time what to do? Look at the sentence. Let's study together. This is an example, student. In answer what we did, we have written as it is sentence. Let's study together, added comma after that. And one of the rule is there that if your sentence is starting from let's or let us, so you have to make that your question that your answer shall we question mark. So student, we have added shall we question mark, and rest of sentences are given it for your student for what purpose, that you can do a study at it. And I hope so you got it the lesson. For further student question, be in contact.